Hello. So a very good morning and a warm welcome to everyone. आप सभी खूबसूरत लोगों का स्वागत इस चैनल पर जिसका नाम है ऑलिवबोर्ड। मैं रोशन प्रताप सिंह फिर से। सो वीकेंड मॉक की पहली मॉक देख रहे हैं हम। सो विल बी हैविंग मिक्स मॉक। आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सो विल बी डूइंग DI, 2 DI, DI, then caselets, then Q1 Q2 comparison, then data sufficiency, simplification, number system, number series, and variable based quant. Variable quant. So this all things we'll be doing in this session, है ना? DI caselets, quantity comparison, data sufficiency, simplification, number series, and variable arithmetic problem. Clear? So this all things will be there in the today's session. So am I audible? Just do comment whether I'm audible or not. सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? और कैसे हो सारे के सारे? चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ ये वेरिएबल क्वांट है, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके पास है, ये लो। This is the timer and this is the question. ठीक है। A, B, C, D are 5 persons. The weight of A, B, C is given in variable form, that is 90%, 112%, and 94% respectively of the average weight of all the five. The ratio of the weight of D and E is this much. The difference between the weight of D and E is 75 kg. What is the average weight of the entire 5 persons? So what should be the average weight of the entire 5%? This is needed, right? So we have A, B, C, D and E, isn't it? So ABC is, the weight of ABC is 90%, 112% and 94% of the average weight of all five. Okay. So let's consider average of all. Average of all as 100x. I'm considering the average weight of all the people as 100x. The moment I'm considering, अगर मैंने सबके average weight को 100x मान लिया, सबके average को 100x मान लिया, तो A का कितना हो जाएगा? तो A का 90%, that is 90x. B का कितना हो जाएगा? तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 112x हो जाएगी। और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो C की वैल्यू 94x हो जाएगा। ये इन तीनों का निकल कर आ गया, ठीक है। ए का निकल गया, बी का निकल गया, सी का निकल गया। अब डी एंड ई का ना मुझे रेशियो पता है। द रेशियो ऑफ डी और ई का कितना आपका 6 and 11 है, ठीक है। अच्छा, डी एंड ई का टोटल कैसे निकलेगा? डी और ई का टोटल सबके सबके टोटल में से अगर मैं इन तीनों का टोटल माइनस कर दूंगा तो डी और ई का निकल जाएगा, ठीक है। सो व्हाट अबाउट देयर टोटल? सो दिस इज 90x, 112x एंड 94x, isn't it? So let me add this total first. Let me add this total. इन दोनों का अगर टोटल मैं देखूं तो कितना हो गया आपको? दिस इज 100 give this 10 over there here, तो ये 20 बन जाएगा। so this is 200 plus 96, तो 296x, isn't it? so 296x आ गया सर। इसमें से 10 मैंने यहाँ ट्रांसफर कर लिया, ये 100 बन गया। 100 और 100 कितना हो गया आपका? 200 प्लस 96, तो 296x आया इन तीनों का टोटल। एंड द टोटल ऑफ ऑल द पीपल, टोटल ऑफ ऑल पीपल विल बी 100x into 5। 500x टोटल निकल कर आया। 500x में से अगर मैं 296x को माइनस करता हूं तो मुझे d प्लस ई का मिल जाएगा। d प्लस ई का कितना हो जाएगा आपको? 500x माइनस ऑफ 296x। सर ये कितना हो गया आपका? 4, इस पे 4 डाल दोगे तो ये 300 बन जाएगा, तो 204x। डिस्ट्रीब्यूट दिस 204x बिटवीन d एंड e, और ये जो रेशियो आएगा इनका वो कितना है आपका? d और e का, दैट इज 6 and 11। 6 and 11 17 यूनिट में ब्रेक करना है। सो दिस ये से इसे हम इजीली 17 यूनिट्स में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? 17 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 204।
सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 टाइम्स ऑफ 134, सो x की वैल्यू आपका 12 आ गया। द मोमेंट वी गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स 12, सो मुझे d की वैल्यू निकल गई। द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स कितना आ गया आपका 17 point equals 204, so 1 unit will be equal to 12x. if 1 unit is 12x, d की वैल्यू कितनी हो गई 72x, और e की वैल्यू कितनी हो गई 12 into 11, that is 132x। मुझे सबकी वैल्यू x के टर्म में निकल गई, a b c d and e। what the difference between the weight of d and e is 75। d और e में 75 का डिफरेंस दे रखा है, so d से e का डिफरेंस कितना, so this particular difference is 50x। ये पर्टिकुलर डिफरेंस कितना हो गया आपका 50x हो गया, 13 माइनस 5 60x, 60x हो गया, डिफरेंस इज 60x, और ये डिफरेंस कितना कह रहा है, दिस पर्टिकुलर डिफरेंस इज 75 kg। सो 60x इज गिवन एज 75 kg, ये वैल्यू मुझे निकल कर आ गई। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 5%, तो मुझे 100x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। 60x की वैल्यू पता है, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 बाई 60x टाइम्स ऑफ 100x। This is eliminated, 15 times of 4, this is 15 times of 5, and this is 4 times of 25, so 5 into 25, that is 125। so सभी का जो एवरेज निकल कर आया, that is 100, just a second, 15 times of 4, 15 times of 5, this is 4 into 25, that is 125। so सभी का एवरेज कितना है आपका, टोटल एवरेज 125। mm, 296 रघु 296। नहीं, दिस वाज 296 ना, एवरेज ऑफ ऑल इज 100x, सभी का एवरेज कितना 100x है, तो टोटल विल बी 500x। ये 100x का 90% है, 100x 90% इज 90x, 112x and 94x, टुगेदर दे आर 296x। 296 प्लस 204x इक्वल्स कितना 500x आ गया, ये सबका टोटल निकल कर आ गया। नाउ डी एंड ई का रेशियो दे रखा 6 and 11, 6 and 11 इज कितना 17, 17 204 के इक्विवेलेंट है, तो 17 टाइम्स ऑफ 1 and 34 17 टाइम्स ऑफ 2, so 1 unit will be 24 12x, so 12 into 6 is 72x and 12 into 11 is 132x, ये निकल कर आया। नाउ डिफरेंस इज गिवन, डिफरेंस किसका गिवन है, डिफरेंस ऑफ डी एंड ई इज 75, डी और ई में डिफरेंस कितना आपका 50 का दिख रहा है आपको, दिस इज द डिफरेंस ऑफ 50 60, सॉरी डिफरेंस ऑफ 60 आ गया, सो दिस 60x इज 75 kg, 60x की वैल्यू 75 kg आ गई, so we need to calculate what is the average weight of the all the 5%, the average of weight of all the 5% is 100x, 100x की वैल्यू निकालना है 15 times of 5 and 15 times of 4, 4 times of 25, that is 125। is it clear Raghu? how come 255 is coming, आपका 255 कैसे आ रहा है, देखो A, B, C, D and E are 5%. The average rate of A, B, C is 90%, 94% of the respective average of all five. So all five का average कितना माना 100x माना. 90% of this is 90x, this is 112x and this is 94x. ये निकल कर आ गया. So that total is 296x. And the total of all the 5% is 500x. 5 लोगों का average इतना है तो 500x. 500x में से 296x को मैंने माइनस कर दिया तो दिस इज 204x. ये डी एंड ई का टोटल आ गया एंड डी एंड ई का जो रेस्पेक्टिव रेशियो है वो कितना है 6 और 11 है. 6 and 11 को में 204x को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दिस इज 17 यूनिट्स, 17 यूनिट्स इज रिप्रेजेंटिंग 204x, तो ईच यूनिट कितने का हो जाएगा, ईच पॉइंट 12x का हो जाएगा. 17 का 12 टाइम्स निकल कर आ गया. ठीक है, तो ईच यूनिट अगर 12x का आ गया तो 6 यूनिट कितने का आ जाएगा 72x एंड 12x into 11 दैट इज व्हाट 132x. ये सबका आ गया, उन तीनों का आ गया, इन दोनों का भी आ गया. नाउ द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ डी एंड ई इज 75. सो डी और ई का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है 60x का. 60x इज रिप्रेजेंटिंग 75 kg, सो
what is the average weight of all the five के average कितनी है 100x की value आपको निकालना है. You are not here to calculate, बच्चे. You are not here to calculate the. हाँ 11 from here also you can do 11 minus 6 is 5 unit. 5 unit is what 75, each unit will be 15, so this is 15 into 6 90, and this is 15 into 11 165. And even we are using 72x now. Even we are using 72x. 60x equals what? 60x equals 75. So d will be d, weight of d will be what? The weight of d is 72x. 72x will be what? 75 by 60 into 72. 15 times of 4, and this is 15 times of 5, and 4 times of what? 4 times of 18. 18 into 5 is 90. Anyhow, you will be getting d equals 90 only. But here what was needed? Here needed is the average of all. Average of all will be 100x. अगर तुम यहाँ से कनेक्ट करते हो 5 पॉइंट की वैल्यू, अगर सपोज 5 पॉइंट की वैल्यू 75, तो यू आर गेटिंग व्हाट? डी एंड ई. डी एंड ई आर नॉट रिक्वायर्ड. डी एंड ई आर सेम ओनली. रघु, क्लियर? चलो नेक्स्ट. बिफोर कमिंग टू दिस क्वेश्चन, फर्स्ट कंप्लीट दिस पार्ट. Yes, Raghu, D and E will be. Why you are calculating D and E? Is it necessary to calculate D and E? It's not necessary to calculate D and E. Okay. How to calculate cube root? Take the pair of last three number. The unit place will be 6, and 175 is between the square cube of which two number? Sir, 5 cube is 125 and 6 cube is 216. So take the smaller number. So this is a cube of 56 plus of multiply. Same process. Make the pair of last two number for square root. The unit place will be either 4. 4 square is 16 or 6 square is 16. So unit place will be either 4 or 6. 19 is between the square root. 19 is between the square of which two number? 4 square and 5 square. Take the smaller number. Take 44 or 46. 4 into 5 is what? 20. So compare with 20. This 19 is less. That means this is a square of 44 plus of 36 square. This is your answer. So what about the unit place? The unit place will be 6 into 4, that is 4, and 6 square is 36. 6. So the unit place has to be 6 plus 4 0. So I am eliminating these two numbers. This will be eliminated. And what about the digital sum? If I want to go via digital sum, so the digital sum will be 56 is 5 plus 6 11. 11 means this sum of 2. Multiply by 4 plus 4 is 8. Plus of 36 is having a digital sum of 0. So 8 into 2 is what? 16. 16 means 7. So 7 will be there in the digital sum. What about this number? 7 7 14. 14 plus 7 plus 7 is 14. 14 plus 3 is what? 17. So this is having a digital sum of 8. So this won't be the answer. 6 plus 3 is 9, eliminated. This is 8, so this won't be the answer. 6 3 9 7, so this is 7, so answer will be 3760. 3760. We have checked it via two parameters, via unit place as well as this sum. Clear?
Yeah, Raghu, you can solve it also. Okay. So what about this? This is a square of 289 and this is 529 is equals under root of x, isn't it? So this will be added. Both the numbers will be added. You need to add this, then you have to make a square of that particular number. Fine. So first you have to add these numbers, then you have to make a square. Fine. So will I be doing it via digital sum? Yes, it is possible because this is a question of simplification. So you can add this also. Anybody getting the answer? Anybody of you is getting the answer? Okay, let's add this. Give 11 over here. So this will be 818. So this is 818 is equals under root x. So x will be 818 whole square. So 81 is having, see what about the digit sum of this particular number? This is your answer. Unit place will be 8 square is 64, that is 4 should be there. So eliminate this two part. We have this three options. मेरे पास ये तीन options हो गए. अब none of this risk है. तो मुझे अब इसका digit sum देखना है. 8 plus 1 9 eliminated. तो digit sum कितना आया आपका 8 आया और 8 का square कितना हो गया 64. Digit sum is 8 square. Because 81 का digit sum कितना हो गया 0 eliminate हो गया 8 square is 64. 64 means 6 4 10 मतलब 1 आ जाएगा. So 1 will be there. So 9 eliminated. 6 to 8 plus 1 9 eliminated. तो 6 और 4 10 10 मतलब 1 आ गया. 5 4 9 eliminated. 7 3 10 10 so this is 0 so eliminated so answer will be 669 124. आपने दो पैरामीटर से चेक किया डिजिट सम से एज वेल एज यूनिट प्लेस से सो यू कैन टेक दिस रिस्क. और किसी का आंसर आया 669 124. रघु का आ गया, मुरलीन का आ गया, वेरी गुड. अदर्स और किसी का नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है. क्वांटिटी ओरिएंटेड क्वेश्चन है. आपको Q1 और Q2 के बीच में कंपैरिजन करना है. व्हाट इज Q1? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 84 एंड द HCF इज 12. द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स इज, ठीक है. और Q2 क्या है? Q2 is K which is equal to number of trailing zeros in 620 factorial divided by 50. ठीक है, ये Q1 और Q2 है. we have to compare this. okay, the sum of two numbers is 84. see, अगर दो नंबर की बात करें, let's say two number are x, so any number is written in the form of h, in the form of HCF A into HCF B के फॉर्म में कोई नंबर लिखा होता है. HCF कैंसल आउट हो जाता है तो रेशियो के फॉर्म में वो नंबर आ जाता है. सपोज 45 और 30 है. So this is written as 15 into 3 and this is written as 15 into 2. 15 being their common factor, right? 15 कट जाता है और ये रेशियो आ जाता है. ठीक है, तो H into AB के फॉर्म में नंबर्स लिखे होते हैं. What is H? H is the HCF. And what is A and B? A and B are two co-prime numbers. ठीक है, HCF is 12, so we can write the numbers as 12A and 12B. Now what is given? Sum of numbers is 84. तो sum निकाल दो. तो sum of the numbers क्या हो जाएगा आपका? 12 times of A plus B. This particular value is given as 84. ठीक है, तो A plus B की वैल्यू कितनी होगी? दिस इज 7. ठीक है, A and B are two co-prime numbers. तो कैसे हो सकते हैं? पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगी? A equals 1, B A equals 1 and B equals 6. 1 plus 6 is 7. A equals 2 and B equals 5. 2 plus 5 will be 7. A equals 3 and B equals 4. Fine. 4 and 3 won't be taken because 4 और 3 सेम वैल्यू आ गई. तो देयर आर कितना पेयर्स? 3 पेयर्स. तो 3 पेयर्स निकल कर आ गए. And what is this? The sum of the sum of, what is the quantity was? Sum of the two, the total number of such pairs. So total number of pairs is कितना? 3. So the value of this quantity 1 is 3. टोटल पेयर्स कितने निकल कर आ गए? 3 निकल कर आ गए. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? K इक्वल्स नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 620 फैक्टोरियल. ठीक है, 620 फैक्टोरियल. 620 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? सो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ 5 एंड नंबर ऑफ 2s. ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे वो 5 और 2 पे डिपेंड करेगा. ठीक है, the amount of 5 multiplied with the amount of 2 will give the definite number of zeros. ठीक है, अगर मान लो किसी एक्सप्रेशन में 5 की पावर 11 है और 2 की पावर 19 है, so the number of zeros will be 11 because 11 pair is possible. Let's say if 5 की पावर 24 है multiplied by 2 की पावर 9 है, तो number of zeros will be 9. It depends upon the
possible pairs of 5 and 2. How many pairs are possible? Depending upon the nature of किसके पास ज़्यादा 5 है, किसके पास 2 है. Either 5 will be more or 2 will be more. In 620 factorial, 620 factorial is 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, like this. So number of 2's are immense numbers. 5 की संख्या हमेशा कम है इसमें. तो 620 factorial में let's count the number of 5. How to count the number of 5? I am dividing this by 5. 12 times of 5 कितना हो गया आपका 60 हो गया. So this is 124 times. 12 times of 5 is 60. 124 times. So 5 से काटो. 24 times is 120. 24 बार में कट गया ये. 5 से काटो. 4 बार में कट गया. ठीक है. Now remove this and add all this value. So 124 plus 24 is 48 plus 5 plus 4. 124 plus 24 plus 4. So ये 140 152. So ये 152 निकल कर आ गया. ठीक है. इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ 5s कितने होंगे. तो 5s will be, number of 5 will be 5 to the power 1 by 152. In 620 factorial, 620 factorial में number of 5 कितने होंगे 152. Hence the number of zeros will be 152. So number of zeros is 152, but k equals number of trailing zeros in 620 factorial divided by 50. So number of trailing zeros कितने होने वाले 152. In 620 factorial में number of zeros जो होंगे trailing जो होंगे right hand side में जो number of zeros निकल कर आएंगे वो 152 आएंगे. Divide this by 50. Divide this by 50. So the moment you are dividing this by 50, this is 2 point something. 2 point, the value of k will be 2 point something, and value of first expression is 3, and this value is what 2 point something. It means the value of quantity 1 is greater to that of quantity 2. q1 की value जो होगी वो q2 से बड़ी होगी. Clear? q2 is not 150. Raghu, you're not right. Check your answer, Raghu. 620 factorial. Number of zeros in 620 factorial divided by 50. So number of zeros in 620 factorial is 152. How many zeros are there? 152 zeros divided by 50 will become 2 point something. Quantity 1 is just 3 and quantity 2 is 2 point something. So definitely 3 is more than that of 2 point something. Clear? This is a question of data sufficiency. What is the ratio of the length and breadth of a rectangle? You need to calculate the ratio of length and breadth of a rectangle. Clear? Statement 1 says area of rectangle is twice the area of circle. Radius of circle is equal to the side of a square whose area is 196. Fine. So from here, area of rectangle will be known, but we don't know the ratios of length and breadth. So statement 1 alone won't be giving the answer. Perimeter of rectangle is 28 more than the circumference of circle. Perimeter of rectangle is, so from here also we won't be able to calculate the answer. But what about using 1 and 2 together? Here the area of square is 196. So a square is 196. So the value of a will be 14. Right? And the radius of circle is equal to the side of a square. So radius of a circle is equals 14. Area of rectangle is twice the area of circle. Area of rectangle is L into B. Area of circle is pi r square. So area of rectangle is twice the area of circle. This is given. So from here we can be able to calculate the value of L into B. So 2 times of 22 by 7 into 14 into 14. Clear? So L into B is known. Now coming to the second expression, perimeter of rectangle is 28 more than the circumference of circle. Circumference of circle is 2 pi r. So perimeter of rectangle is 28 more. So 28 more will be 2 into L plus B.
So this is circumference of circle and this is perimeter of rectangle. So circumference of circle plus of 28 is equals what? Perimeter of rectangle. So we know the value of r. So 2 into 22 by 7 into r is equals 14 plus of 28 is equals what? 2 into L plus B. So from here we can we can eliminate this 2 also. 22 by 7 into r plus of 14. R is equals 14 plus of 14 is equals L plus B. So we know the value of L plus B and we know the value of L into B. So from here we will be able to calculate the answer. So statement 1 and 2 both are needed. Okay, so statement 1 and 2 are both are needed. So both are needed to calculate the answer. You won't have to do this, है ना? Only you can just see what. But I'm just making the expression to let you understand कि हाँ भाई ऐसे expression से आ जाएगा. Orally आप कर सकते थे सर, यहाँ से possible नहीं था, यहाँ से possible नहीं था, 1 and 2 का use करके आ जाएगा. In examination you can just have an overview. You need not have to solve. See, I'm not solving the entire identity. मैं सिर्फ इसको यहाँ तक लेकर आया आपको दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ से L into B निकल जाएगा, यहाँ से L plus B निकल जाएगा. और L into B पता है, L plus B पता है, तो यहाँ से L और B भी निकल जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब statement 1 and 2 both are needed. Yes Raghu, even I am not solving bacha. Clear? This is again Q1 Q2. A can do a piece of work in 10 days, B in 15 days. They work together for 5 days. The rest of the work is finished by C in 2 more days. They get this much as wages. A can, this is this statement. A can do the work in 10 days, B in 15 days. Considering the total work is 30, so their efficiencies are 3 and 2, that is 5. They work together for 5 days. So in 5 days they will be completing how much? 25 units of work. So the remaining work is 30 minus of 25, that is 5. And this particular work is being done by C. Wages are always distributed in the ratios of work, not in the ratios of efficiency. Wages को हमेशा work के ratio में बांटा जाता है, but work is directly proportional to efficiency. If the time is constant, तो work और efficiency same हो जाएगा. This we know. Now, it means the ratios of work done by A, B and C will be: C has done 5 units of work. A has done how much work? So A has done worked for 5 days. So 5 into 3, that is 15 work. And B has worked for 5 days. So 5 into 2, that is 20. 5 into 2, 10. 5 into 10. So this is the amount of work they are doing. That means the entire work is distributed in this ratio. 15 work 5. So we can eliminate. So this is 3, 2 and 1. So this is not the ratios of efficiency. These are the ratios of work. है ना? तो ratios of work निकल कर आ गया 3, 2 और 1. They get a total weight of 6,000. So 6,000 निकल कर आया. 3 to 5 plus 1 6. So he will be getting 3,000. He will be getting 2,000. And he will be getting 1,000. So these are the respective wages. What is the sum of rupees 100? Quantity 1 क्या कह रहा है? What is the sum of rupees 100 and the daily wage of B? So sum of rupees 100 and daily wage of B is equals 2,100. So this is quantity 1. Quantity 1 is 2,100. And what is the daily wage of C? So daily wage of C is 1,000. So definitely quantity 1 is greater as compared to quantity 2. Three is to 2 is to 2.5. Why 2.5? See, efficiencies and days are not needed, only work is needed. LCM was 30, they work for 5 days. In 5 days, he has done 5 into 3, 15 work. He has completed 10 work. And C has completed the remaining work. In how many days, it won't matter. So C has completed 5 units of work.
So he will be given for 5 units of work. उसको 5 वर्क का पैसा मिलेगा. So 15, 10 or 5 is particular ratio में, this is the ratio of work. In this particular ratio, the entire wages will be distributed. 3 plus 2 is 5 plus 1 is 6. 6 unit is equals 6,000. So each unit will be equal to 1,000. So 1,000 into 3, 3,000, 2,000 and 1,000. These are the wages of A, B and C. Quantity 1 कह रहा है the sum of rupees 100 and the daily wage of B. Sum of rupees 100 and daily wage of B is 2,000. That is what? 2,100. This is quantity 1. And this is quantity 2, which is equal to daily wage of C. That is 1,000. So 2,100 is greater than 1,000. So quantity 1 greater than quantity 2. You need not have to find out the efficiency, bacha. This is quadratic pattern. X square minus 37 root 2x plus of 140 equals 0. 5y square minus of 24y minus of 117 equals 0. Okay, what to do? 140 को 2 से divide कर दो. तो what the moment you are dividing this by 2, so this will become what? 70. 70 के ऐसे factor करो कि 37 आ जाए. 70 can be written as 7 and 10, 7, 2 and 5. Fine. This is 140. Break 140 such that मुझे इसको 2 से divide किया तो 70 आ गया. 7, 7, 2 and 5. So I need to get 37 over here. So minus and plus both will be positive and minus minus will be plus minus. So we have to check this out. Some coefficient is there missing. This particular number is missing, I guess. 7 and 2. Because from this entire value, are you getting 37? We are getting 37. This is 35 and 2. 7 into 5 is 35. 35 plus 2 is 37. Now this is for x. What about y? Sir, break this 5. 117 as 13 and 13 into 9. So by eliminating, by subtracting, you have to get 24. How to get 24 from subtracting? Both should be odd or both should be even. So break this in 3 and 3. So 24. So 13 into 3 is 39 and 5 into 3, 15. So 39 and 15. 39 minus 15 will be what? 24. Now you have to divide this by coefficient of x square by 1 and this by 5, or else you do one thing, make a cross multiplication method. The coefficient of y square was 5, so I'm multiplying this over here. Coefficient of x square is 1, I'm multiplying over here. So this is, even you can do this. If you don't want to do this, you can use this also. Coefficient, what is the real method? The real method is you have to divide this by the coefficient of x square and this by the coefficient of y square. Both the method you can do. Even you can do the cross multiplication method also, or even you can divide it also. So this is 35 and 2. ये 35 और 2 निकल कर आ गया. Both the signs will be positive. So this is x, and what about this? This is almost equal to 8. और ये कितना हो गया आपका? 3 हो गया. Fine. So this is almost equal to 8. Minus and minus will be plus minus. So this is plus and this is minus. See, coefficient of x. This particular coefficient of x is more than this. So x is greater than y. But the value of 2 is less than 8. So x is less than y. So answer will be C and D. Relation can't be established. So option E will be your answer. Clear? So 35, it was 35 root 2 and 2 root 2. These were the roots. The roots were 35 root 2 and 2 root 2. है ना? Divide this by 2, that is 70. 70 will be broken as 7, 2 and 5. So I found out 35 and 2. 35 plus 2 is what? 37. So one of the root will be having 35 root 2 and the other root will be 2 root 2.
ये दोनों रूट्स निकल कर आ गए. So both are positive, and here one of the roots will be positive, the other roots will be negative, right? So value of this particular number is greater as compared to this, but value of 2 root 2 is less as compared to 2 root 2 is less as compared to 8. So we can say that x is also less than y. So signs are changing, so answer will be C and D. Getting the answer? E. Acha, Raghu has got the answer. Moralin also got the answer. Very good. For what value of k? For what value of k, the roots of the quadratic equations are real and equal. Real and equal roots. Okay. For real and equal roots, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या करते हैं हम? रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होगा. सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी 0 इन केस ऑफ रियल रूट्स एंड रियल एंड इक्वल रूट्स. अच्छा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो उस कंडीशन में जो रूट्स आएगा वो इमेजिनरी आ जाएगा, ठीक. एंड इफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस पे रूट्स जो आएंगे वो रियल आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे, रियल रूट्स निकल कर आएंगे. क्लियर है? तो रियल एंड इक्वल के लिए ये कंडीशन है, ठीक. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी? सो ए विल बी कोएफिशिएंट ऑफ x square, that is 9, b is equals 2k, and c equals 4. So b square minus 4ac equals 0, that means b square will be equal to 4ac. b की वैल्यू कितनी है? 2k. This is 2k whole square equals 4 into a is what? 9, and c is equals 4. So 4k square is equals 36 into 4. This 4 will be eliminated, so k will be equal to plus minus 6. But so k equals plus minus 6, so both b and d will be our answer. So the value of k will be positive 6 as well as negative 6. So both b and c will be your answer. Clear? So for real and equal roots, b square minus 4ac will be equal to 0. So this is important pattern of quadratic expression, ठीक. So both this pattern and this pattern both are important. Clear? This is variable based question of probability. In a bag there are 4 green, x red and x plus 2 blue balls. If 2 pens are drawn at random, one after another, the probability of first pen is blue and the second pen is red is 5 by 44. What is the value of x? ठीक है. Green की बात करूं, how many greens are there? So greens are 4, red is x, and blue balls we have x plus 2. So what is the entire number of ball? So 2x plus 6 is the total number of ball. If two balls are drawn at random one after another, the probability that the first pen is blue and the second pen is red. अच्छा, blue first is blue, तो blue की probability क्या हो जाएगी? x plus 2 c1 by samples total, है ना? x plus c1 will be the event for this, multiplied by second pen is red will be x c1. This is the event. And what about sample space? Sample space will be 2x plus 6 c2, and this is equal to 5 by 44. This particular data is equal to 5 by 44. Clear? x equals 3. ग्रीन 4 आ गए, रेड आपका 6 आ गए, रेड आपके x आ गए और ब्लू आपका x plus 2 आ गया. दिस एंटायर बॉल वन आफ्टर द अदर, फर्स्ट pen is
फर्स्ट पेन इज ब्लू, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, x प्लस टू C1, दिस इज द इवेंट, है ना, नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन चूज वन ब्लू बॉल। एंड रेड कितना हो जाएगा, तो रेड विल बी, फर्स्ट इज ब्लू एंड सेकंड पेन इज रेड, रेड विल बी XC1, XC1 is x, so we can write this value as x plus 2, x plus 2 into x upon what about this 2x plus 6C2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, NC2 की वैल्यू क्या होती है, वो नंबर इंटू a प्लस c, NC2 will be written as n factorial by 2 factorial into n minus 2 factorial, इस तरीके से लिख सकते हैं। So this will be n into n minus 1 into n minus 2 factorial upon 2 into n minus 2 factorial. So this will be eliminated. So n into n minus 1 by 2. So we can directly write this as n into n minus 1 by 2. So 2x plus 6, n into n minus 1. n minus 1 will be minus 1, that is 2x plus 5 by 2, है ना, by 2 भी आ जाएगा, n into n minus 1, this is n, this is n into n minus 1 will be just one less, by 2, by 2 will come on the top, and this particular value will be having 5 by 44. So you won't have to solve this identity, you have to put the values, and how to put the values, how to substitute the values. See, look at over here, here 5 is a prime number, here 44 consists of 11 as a prime number. So मुझे यहाँ पर 5 और यहाँ पर 11 लेकर आना है, तो पुट ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी जो मुझे 11 का फैक्टर दे दे, ठीक है। इफ आई एम पुटिंग, सपोज आई एम गोइंग फॉर 3, सो अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 प्लस 2 कितना, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 इंटू, सपोज आई एम पुटिंग x इक्वल्स 3, सो 3 प्लस 2 कितना हो गया आपका 5 इंटू 3 इंटू 2, देखो ये 5 यहाँ बच सकता है ना, यहाँ 5 बच सकता है, तो यहाँ आ गया पुट x इक्वल्स 3। सो द मोमेंट मैं x इक्वल्स 3 पुट कर रहा हूँ वाया ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शन से पुट नहीं करूंगा तो ये मेरे लिए खतरनाक हो जाएगा एग्जाम हॉल में। सो मैं x की 3 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सो मोमेंट आई एम पुटिंग x इक्वल्स 3, सो दिस बिकम व्हाट 5 इंटू 3 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 12 टाइम्स ऑफ कितना 3 इंटू 2 6 प्लस 5 11, इसके अंदर 11 है, बट लुक एट दिस, क्या ये 11 यहाँ बच सकता है, हाँ जी, देयर इज नो प्राइम नंबर, सो दिस इज पॉसिबल केस। एलिमिनेट करके देखो क्या ये 5 by 44 आ रहा है, 3 into 2 is 6, 6 into 2, so this is 5 by 22, this is not possible। फिर से सर यहाँ x की वैल्यू आपने 3 पुट किया, तो दिस इज 5 into 3 into 2 अपॉन कितना हो गया आपका 12, दिस इज 3 into 2 is 6 plus 6 12 plus 6 plus 5 is 11। so जब मैं इसको एलिमिनेट किया, so this 3 and 2 is eliminated, so this is what, this is coming to be 5 by 22, but we need 5 by 24। So question is with repetition or clear? अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कोई और वैल्यू पुट करूं तो क्या होगा, अगर सपोज मैं 5 पुट करता हूं, 3 के बाद अगर मैं 5 पुट, इफ आई एम पुटिंग 5 ओवर हियर, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, सो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, सो दिस विल बी 5 इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 2 कितना हो गया 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 इज 7 प्लस 6 दैट इज 13। सो ये पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज ऊपर 13 है ही नहीं, फिर वो 13 का फैक्टर आ जाएगा, तो 5 वोंट बी देयर, 5 एलिमिनेट कर दो 5 को। अगर मैं 6 पुट करता हूं तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, बेस को देखो, बेस में मेरे पास 11 होना चाहिए, अगर मैं 6 पुट करता हूं वैल्यू ऑफ 6, सो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, अगर 6 पुट करता हूं तो 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 8 इज 18, 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 इज 18, और ये कितना हो गया 6 इंटू 12 प्लस 5 17, ये भी नहीं होगा पॉसिबल। क्यों नहीं होगा पॉसिबल सर, यहाँ पर फैक्टर ऑफ 11 है ही नहीं, सो 7 भी एलिमिनेट हो गया, 6 भी एलिमिनेट हो गया, सो 3 बचा मेरे पास, सो 3 विल बी द आंसर, है ना, 3 will be the answer, 3 has to be the case। clear? so 3 will be the case, 3 वो केस हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स 3, अगर मैं x सब्स्टिट्यूट करता हूँ 3 से, तो सो देखो ये क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, एक रिपीटिशन वाला बोला नहीं है, मेंशन नहीं किया whether you are putting the ball or not, तो इसका मतलब वो बॉल दोबारा पुट नहीं कर रहा होगा, ठीक है।
क्लियर, ही इज नॉट पुटिंग द बॉल बैक, है ना, वो वाला केस हो गया। मेरे ना नीचे फैक्टर 11 के मल्टीपल आना चाहिए, तो 11 का मल्टीपल कितना हो गया, 44 आ गई, ये वाला पार्ट निकल कर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब रिपीटेशन वाला नॉट वाला केस होगा, तो आपका आंसर कितना हो गया, द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स 3, द मोमेंट यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स 3, सो यहाँ x इक्वल्स 3 होगा, तो टोटल बॉल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 6, द बैक कंसिस्ट ऑफ 12 बॉल्स, तो एक निकाल दिया होगा तो फिर उसके बाद 11 बॉल्स बचे होंगे, ठीक है, एक बॉल्स निकाल लिया होगा, 11 बचे होंगे, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर रहे, तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, क्लियर। सो ऑप्शन सी हैज टू बी द केस, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स 3, x इक्वल्स 3 पे ही मेरे यहाँ नीचे फैक्टर्स 13 आ रहे हैं, 11 आ रहा है, वरना यहाँ पर फैक्टर क्या आ रहे थे, 13 आ रहे थे, 7 आ रहे थे, इस तरीके के पैटर्न आ रहे थे, ठीक है। सो x इक्वल्स 3 पर ही रिजल्ट निकल कर आएगा। सिमिलर केस, अच्छा ये भी वेरिएबल बेस्ड है, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल बेस्ड, ये ईदर केस आ गया है ना, ईदर अ पर्पल और, उसमें क्या था, फर्स्ट बॉल इज दिस, सेकंड बॉल इज दिस, ये ईदर वाले केस आ गए। यस रघु, एक बॉल आपने जो निकाल दिया आप दोबारा पुट नहीं करोगे, नॉन रिपीटेशन वाला केस होगा, दैट्स व्हाई 2 जो ऊपर गया वो 2 नहीं जाएगा ऊपर फिर, है ना, सो दैट वोंट बी 5/22, इट विल बी 5/44, ये जो 2 है ऊपर, ये 2 फिर नहीं रहेगा, if this 2 is not there, so what is the result, 3 times of 4 is 12, so this is 5/44, clear। a back box contains of 50 marbles of different color, ठीक है, 3 कलर्स है, पर्पल, पिंक एंड ब्लू, फाइंड द नंबर ऑफ पिंक बॉल्स if the probability of picking up a purple ball is 3/5 and that of the either of purple or pink is this, how many balls are there, 50 marbles are there। probability of picking up a purple marble, so purple marble will be, let's say purple marble is x and pink is y, fine। So question says box has 50 marbles, purple, pink and blue, find the number of pink marbles, we have to calculate the value of y if probability of picking up a purple marble is 3/5, so purple marble will be a purple marble 50c1 and this particular value is given by 3/5, आपने ना सिर्फ एक पर्पल निकाला, so एक पर्पल निकाला, x पर्पल आर देयर, so xc1/50c1, you have to write like this, then you can do this, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप ऐसे लिख सकते हो, 5 से काटा 10 बार में, so the value of x is equals कितना 30, so मेरे पास जो पर्पल मार्बल आ गए वो 30 आ गए, and that of either purple or pink, either purple or pink, पर्पल कितना हो गया आपका 30c1 हो गया, इधर केस में और वाला कंडीशन हो गया प्लस आ जाएगा, पिंक मार्बल कितने, तो पिंक मार्बल y है, सो y c1 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस 50c1, दिस इज इक्वल्स टू 4/5, so 30 plus y upon 50 is equals 4/5, 5 10 times eliminated, so the value of y will be what, for 10, so मेरे पास ये 10 आ गया, so that means purple ball is 30, pink is 10, and what about the blue balls, so blue balls will be 10, so total becomes 50, so what is needed, we need find the number of pink marbles, so pink marble is 10, so 10 will be your answer, option D will be the answer, ये भी वेरिएबल केस था, x इक्वल्स 10, यस रघु वेरी गुड, तो x की वैल्यू 10 आ गई, बहुत सुंदर, ठीक है, दिस बोथ आर वेरिएबल बेस्ड, है ना, सो टुडे वी आर सीइंग मोस्टली वेरिएबल बेस्ड, इवन दिस वाज वेरिएबल बेस्ड एंड इवन दिस इज वेरिएबल बेस्ड, है ना, इसमें भी आपको पता नहीं है वेरिएबल के फॉर्म पर है। लुक एट दिस DI, दिस DI इज बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट मार्क परसेंट और प्रॉफिट एंड लॉस पर है, so this is missing DI, we have 5 identities, jeans, shirt, t-shirt, suit and sari, these are the cost price, profit percent, mark percent, discount percent and selling price, ठीक है, so CP, SP and MRP, between CP and SP there is 2 bridges of profit or loss percent, एक ब्रिज प्रॉफिट का होता है, एक ब्रिज लॉस का होता है,
So one at a time, either the shopkeeper will be having a profit or he will be having a loss. So when profit or loss percent is considered, it is being considered on CP. So he is considered as 100%, and this particular value will be either more than 100 or less than 100 or equal to 100 also in case of no profit, no loss. And between MRP and SP, there is a bridge of discount percent. And in this particular case, when these are combined, this is considered as 100%. MRP per discount निकलता है, ठीक है? So let's solve this question. गुड मॉर्निंग आरिफा प्रवीण, बहुत लेट गुड मॉर्निंग हुआ तुम्हारा. डेली क्लासेस चल रही है, मैं एक पैटर्न में लेकर चल रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? Okay, so if the discount percent and profit percent on suit is same, so in suit, talking about suit, the discount percent and profit percent is same. Find out the MRP of the suit. You need to calculate the MRP of the suit. Okay, so this is what? This is CP and this is SP. We can calculate the profit percent from here. How to calculate the profit? So the amount of profit will be 2640 minus of 2200. And how to calculate the profit percent? This is the profit calculated on 2200 times of 100. This is the amount of profit percent, we can say. Clear? So this is what? 440 by 2200 into 100. 00 eliminated, so this is 20%. So the profit percent is 20%. Hence the discount percent will also be 20% because profit percent and discount percent was given. So you need to calculate the MRP of the suit. On the MRP of the suit, a discount of 20% will be offered. That means it is being sold at 80%, which is equal to 2640. So this is 0. 8 times of 3 is 24. So MRP of the article will be 3300. So 3300 will be the MRP of the article. Clear? हाँ जी, क्लियर है. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. रघु, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. MRP of the jeans is rupees 140 more than the cost price of the shirt. Talking about jeans and shirt. MRP of the jeans which is given is 140 more than the cost price of the shirt. So we can calculate this. And the difference between the MRP of MRP and SP of shirt is rupees 780. Find the discount percent on shirt. So we need to calculate the discount percent. This is to be calculated. 33K, 3.3K, bachcha. Yes, Moralin, but it should be 3.3K. Okay, so let's calculate this. क्या कह रहा है? MRP of the jeans is rupees 140 more than the cost price of the shirt. Cost price of shirt we don't know. And cost price of shirt depends upon the MRP of jeans. So 2720 minus of 140. So this will be 2680. Sorry, 2580. So this happens to be the cost price of shirt. Now we know the cost price of the shirt. And the difference between MRP and SP of shirt is rupees 780. 30% is the profit. So we can just say selling price of the shirt will be 2580. 30% profit means 13 by 10
or we can say, so this is 0 0 eliminated, so this is 258 into 258 into 1.3. Okay, so 258 is what the cost price, selling price of the shirt is. 25 is cost price of the shirt is this much. This is being sold at a gain of 30%. 30% profit means it is being sold at 130%, that is 13 by 10 units. So this is 2580. 25 into 10 is 258 into 10 is 2580, and 258 into 3 will be 8 into 3 is 24, 2 15 2 17 carry 1. So this is 4. So this is 4. 3354. So we got to know 3354 is the selling price. 3354. So we know the selling price now. Shirt selling price is known, and the MRP of the shirt is rupees 780 more. So what has to be the MRP? 3354 plus of 780. So this is the MRP of the article. 4 8 5 13 8 3 11 4134. So what is needed? Find the discount percent. So discount percent will be difference of MRP and SP, that is 780 rupees, on 4134 into 100. So the 10% will be 41, 20% will be 20% will be 82. So this is not 82. Eliminate this 4 and 0, or else if you don't want to give, because options are close enough, so don't eliminate this. So 10% will be 413, 20, so answer will be less than 20%. So this is eliminated. This won't be the answer. Answer will be either this or this. 780 by 4134. So if you are eliminating this part, one of the number you have, if you are eliminating, so what will the result? So 10% will be 41.3. What about 20%? 20%, 10% will be 41.3. 20% of this value will be 82.6. So you want to go till 78, you have traveled till 82. So that is 4.6 extra you have taken. So 1% will be 19. So 1% will be 4 point something. So 4 point something. So 82 minus 4, that is still 78.6. So less than 19%. That means 18.86% will be your result. So your result will be 18. On solving this, you will be getting 18.86%. And a calculation was close enough, so I eliminated the last numbers. 18.86%. Getting this answer? Very good, Raghu. Very good, Moralin. So 18.86% will be the result. So will you be doing this? So I'm uploading this file. So where you will be getting the all this PDF. So there are more questions on this file. This is the this was the DI. Apart from DI, this is one more DI. This particular DI is on CI and SI. And one caselet is also there. No caselets. So 2 DIs were there. So I'm putting this file. So you will be getting this on the Oliveboard platform itself, है ना, आपको link मिल जाएगा. And these are some variable based questions. We have done some 5 to 6 variable based question apart from this. So what we have done, ये वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का, इसे कर लीजिएगा. ठीक है, इसे भी कर लीजिएगा. पार्टनरशिप का क्वेश्चन है. ठीक है, Q1 Q2 हमने कर लिया. डेटा सफिशिएंसी हमारी हो गई. ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म का एक था और दूसरा आपका इस फॉर्म का था, ये भी हो गया. ठीक है, और ये वेरिएबल बेस्ड 2 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे. तो ये आपको एंटायर फाइल जो मिलेगा ऑलिवबोर्ड के डैशबोर्ड में मिल जाएगा. इससे आप वहां से एप्लीकेशन पर ये पूरी फाइल आपको मिल जाएगी, वहां से आप ले लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. Do you have playlist for all Quant chapters? No, actually I'm just new at this platform, तो बहुत सारे Quant के questions तो नहीं है, but still I have quicker math section and all. कुछ सेक्शंस है आप कर सकते हैं. सो डेलिबरेटली अब धीरे धीरे क्या होगा कि मैं सारे क्वांट के टॉपिक लूंगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सीआई एंड ऑल. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगा, तो वहां से देख सकते हैं. बट स्टिल वी हैव
सम क्वेश्चंस आर देयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर, सो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।